So we are going to talk about the problematic grounds, the grounds which present problem during construction, during designing and during construction. And there are some engineering ways to understand that what the problem soil are at site or by testing, and then what to do to carry out the remedial measures, the mitigation. आगे लाइन I've intentionally selected a difficult font because we are talking about the difficult soils today. तो इसको जरा आपको मुश्किल पेश आए जानबूझ के मैंने रखा है इसको पढ़ें आप. Because you see the basic purpose is the starting theme is that we want such construction चाहे वो foundations हैं आपकी या earthen structures हैं in such a way that they remain safe during their life under all conditions of environmental variations. ये बड़ा ज़रूरी होता है आजकल के डिज़ाइन में कि आप जो भी करें, जो प्लान करें, डिज़ाइन करें या जो डिज़ाइन रिव्यू करें, उसको फ्यूचर के जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो सकती हैं. पहले भी ये हम इंजीनियर्स को ये चीज़ पता थी एंड वी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट, बट नाउ it is really required that you build in your design or in the design review whatever possible environmental changes can take place must be built in the design. यानी यहाँ तक कि अगर फ्यूचर में आप समझते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है एंड इट कैन गेट फ्लडेड, it is a very serious condition, and that must be, if there is a very positive or high possibility कि वो फ्लड हो सकता है तो उसको बिल्ड करना पड़ेगा. अच्छा, in the behavior of soils, please keep in mind that one thing which is the notorious and the worst enemy of soil and rocks, but soil in particular, is water. किसी भी तरीके से पानी जो है उसको अगर आप रोकने में कामयाब होते हैं या उसको आप चैनलाइज करते हैं, कई दफा रोकना is not healthy thing for water. You channelize it in a proper way. You control it and let it pass. कभी गुजर जाओ, हमें तंग ना करो. इस तरह की सूरत हाल by providing filters or by providing alternate course to it, then your structure will remain safe. And when you take measures by not allowing water to ingress or seep into the ground, even then you are likely to remain safe. So it is water which does a lot of harm in most of the situations, चाहे वो problem grounds हैं या otherwise. आगे होता ये है that many a times we, the technical folks, the engineers don't understand, काम की तेजी होती है, निकाल देती है, and such problem soil they remain hidden, they are not diagnosed in time. आगे. So many years back, next, when जी आगे when geotechnical engineering was being developed, you see, it is during 1920s and 1930s, यानी you could say like 1 century back, जब इस पे काम हो रहा था. डॉक्टर कार्ल केजागी ने सबसे ज्यादा काम किया, who himself was a mechanical engineer, structural engineer and mechanical engineer. He developed soil mechanics, so it is a blend of mechanics, engineering mechanics and soil behavior. So it's a departure from the geology के principles इस्तेमाल जरूर हुए हैं, but it is mechanics. तो उस वक्त उसने देखा जो उस वक्त सूरत हाल थी दुनिया में, people used not to appreciate this discipline of soil mechanics. It used to be considered unimportant. It was considered that structural engineering असल चीज़ है, बाकी जो ये छोटा मोटा ऐसे ही है. तो उस वक्त ये फीलिंग थी, उसने अपने कोर्स में लिखा कि दिस क्लोरीन फाउंडेशन ये किस तरह का फील्ड है. लेकिन in the developing countries like ours, many times even I feel this thing that many, I mean, project owners and even clients and even sensible engineers, they give less lift to the subject of geotech engineering, but that is very bad next, because its outcome is with what Terzaghi again noted, that a stepchild notion.
that in civil engineering we give a lot of importance and a lot of lift to the other disciplines for their study, for their design, and we give less importance to it, as if we are ignoring a stepchild. तो जब ये स्टेप चाइल्ड बन जाता है ना तो फिर ये बदला लेता है. जब आपने इसकी परवाह नहीं की, जब इंजीनियर इसको भुला देते हैं ना, और हमारे सामने है कि most of the problem in civil engineering works, they are the outcome of ignoring or giving less importance to the subject of soil mechanics, and today it is called geotechnical engineering. Again, so होती क्या है problem soil? Ordinarily, to an ordinary eye of an engineer, they will not be visible to you. Normally, you will require to have some keen outlook and some proper guidelines. They are not discovered by normal testing. ये छुपी रहती है, इसके लिए स्पेशल टेस्ट चाहिए होती है जी. Now the problem the world over is not even our country, it's a problem the world over, that there is a pressure on resources. Less grounds are available, the areas, the lands are costly, and now it's a compulsion to build everywhere, wherever you get the opportunity. ठीक है ना, तो दुनिया में भी लोगों ने ऐसे किया और हम भी ऐसा करने पे आ गए हैं. Sometimes it is very thick, weak field, sometimes it is a swelling soil or collapsible, sometimes it is marshy ground, but we do carry out sometimes construction, that is the compulsion. So ये दुनिया का trend है. तो इस वजह से problem soil की अहमियत बढ़ गई है, because the lands are costly. और खासतौर पे अगर आप समझे कि you have to plan something in busy areas, in congested areas, or when there are less alternates available, and the outcome is going to be very important after the construction, then we have to go for the worst site, even a bad site, and we have to improve the qualities of a bad site. Again, ये पहले होती थी इंजीनियरिंग, ये पुरानी इंजीनियरिंग ये होती थी, ओके बैड साइट लीव इट, अच्छी साइट सेलेक्ट कर रहे हैं. ये काफी देर तक ये रुझान काफी प्रोजेक्ट्स में चलता रहा. अब ये जो रुझान है कुछ decades से, there is a lot of shift and a lot of change, and the new thing in it is that let us construct accordingly at the site according to its situation. Very rough sketching guiding principle, the how to know about the presence of the problem soil or problematic ground conditions. एक तो ये है कि we get inferences and we get indications from many. We get indications. How is the sound now? Hello, yeah. So we get indications from many considerations. One is positive indications at site. मसलन मैं मिसाल आपको दे देता हूँ. If you are walking on the site, then of course if it is very soft and swampy, आपको पाँव, you will get with the feel of your site. Even the surface is swampy, you know. Sometimes the sites are highly cracked, kind of map cracking is there. Crack. There will be swelling and contractive soil, swelling and shrinking soil. एक मोटी इंडिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना जी. Then you have to look, if it's not a barren area and you have some construction in the vicinity of any type, चाहे आपके वो अर्दन स्ट्रक्चर बनी है या कोई हाउसिंग बनी है या रोड्स है, whatever, the signs of distress, look for the signs of distress there. उनमें आपको cracks या movements या tilting ये नजर आ रही है कि नहीं. अगर बिल्कुल नहीं आ रही तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अलामत है. That's why in engineering the site visit with open eyes and looking at the adjacent conditions is very important. तीसरा एरिया जिससे हमें इसकी कुछ इंडिकेशन होती है वो ये है कि certain areas are notorious for some bad soil deposits. हमें पता है कि कुछ एरियाज जो है वो थोड़े से बुरे समझे जाते हैं. जैसे when I was a boy, we were given a feeling that the best cricket pitches are made with the soil from Nandipur.
तो वो बड़े हुए तो भी यही ख्याल था। फिर जब इंजीनियरिंग पढ़ी और सॉइल मैकेनिक्स पढ़ी तो फिर देखते ख्याल आया कि इसको देखें क्या है इसको, पता चला वो हार्ड क्लेज है। एंड जब ज़्यादा उसमें इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला वो तो स्वेलिंग क्लेज है। स्वेलिंग क्लेज आर गुड फॉर मेकिंग फास्ट एंड बाउंसी क्रिकेट पिचेस। नंदीपुर इसलिए मशहूर है कि वहाँ से स्वेलिंग क्लेज तो कहीं और से भी मिल सकती हैं। बहरहाल वो एक जगह मशहूर होगी। इट्स नॉट ओनली नंदीपुर, द होल बेल्ट अराउंड दैट एरिया। You can cover many parts of Sialkot. You can cover the Narwal area, and whatever projects we have constructed, we have designed there, they are having swelling soils. I myself was mitigating the swelling soil effect on the Sialkot Lahore motorway during its design and construction phase. And for the famous Narwal Stadium, you see, we were very careful in reducing the effect of the swelling soils, because the swelling soil they attack the lighter structures. मुसीबत ये है, अगर आप साइट पे हों और आप देखें कि हैवी स्ट्रक्चर्स तो ठीक ठाक है, but the light works have suffered more damage because the upward stress you see cannot be resisted properly by the increased downward force in light structure. नीचे का उनका sigma fy is equal to 0 जो equation है, उसमें downward force is less and the upward force is high sometimes. आपको ये होता है ना, तो अगर आपकी डाउनवर्ड फोर्स कम हो और upward force is too high because of the swelling, because the swelling stress will act from bottom to top. Then basically, if this is the ground, ये upheaval, this is a kind of upheaval. And if it is a settling soil, this is the sag. वही जो आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस में बीम का सैग और हॉक का कंसेप्ट है, एक्जैक्टली वही स्ट्रक्चर्स में भी हमें समझना पड़ता है इन डिफरेंट ग्राउंड कंडीशंस। अच्छा, फिर चौथी चीज है, we know in a number of situations the environmental patterns and environmental conditions. Certain areas are known as the arid areas, certain are high rainfall areas, आपको पता है, ठीक है ना जी। How the being arid or being heavy rainfall or semi arid किस तरह establish होता है? सबसे बड़ा criteria इसमें होता है average annual rainfall, ठीक है ना जी। If the average annual rainfall in an area it has been less than 300 millimeter or so, वो आपके एरिड जोन में आ जाते हैं। तो इस तरह क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना जी। कुछ एरियाज आपके बहुत हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं, तो वो जो जितना एरिड कोई इलाका होगा उतनी पॉसिबिलिटी है वहाँ कोलैप्स पोटेंशियल वाली सॉइल ज्यादा पाई जाती होंगी। सो इट गिव्स यू वेरी गुड इंडिकेशन। जितना हैवी रेनफॉल वाला होगा तो आपको अंदाजा होना चाहिए वहाँ हाई ग्राउंड वाटर टेबल, सॉफ्ट ग्राउंड, और इफ द स्लोप्स आर देयर द स्लोप स्टेबिलिटी इश्यूज कुड बी देयर। Then we get positive issues from lab and field data. मतलब field data को ये समझ लें, SPT is very common. For instance, I remember at Hub for a cement project, Galadari cement project at Hub Chowki, the bores showed very high SPT blows, like 40s, 50s, 60s. While the test pits showed very low dry densities like 1.2, 1.25, 1.3 gram per cc. So both were not, you see, interrelated. उसकी क्या वजह थी? There were dry bonds between the soil particles, leaving air gaps in between, and that bond would give way by wetting. जो ही वो soil गीली होती थी, sudden settlement called sudden collapse. Collapse is a sudden settlement. अगर आप settlement खाली किए तो उसका मतलब होता है relatively gradual. And the finer the soil, like we talk of cohesive soil, it will be more gradual or slow. Sands में it is relatively, or granular soil में it is relatively quick. But what happens in collapse? Collapse is also a settlement. But as soon as the medium gets wet under the weight, higher the weight, more will be the magnitude of the collapse. This becomes very serious. तो ये मैंने आपको अंदाजा बताया कि फील्ड टेस्ट भी हमें अंदाजा एक बता देते हैं, खुली आंखों से उसका तरीका है। लैब टेस्ट भी बता देते हैं, when we have you see
हाई प्लास्टिसिटी सॉइल्स, और शायद आप में से कुछ वाकिफ होंगे जो सॉइल से डील करते हैं. देयर इज अ टर्म कॉल्ड एक्टिविटी. In cohesive soil, the term is called activity, which is a ratio of the percentage of rather the plasticity index divided by the percentage of the clay particles, which are finer than 2 micron. है ना, clay उसको कहते हैं जो कि 2 micron बहुत छोटी size की plate structure. तो यानी वो एक्टिविटी की जो अगर ज्यादा हो जाए, if the activity is high, then you get a feeling कि इसमें गड़बड़ है, ये swelling हो सकती है. पुराने लिटरेचर में अगर PI alone and liquid limit alone used to be higher, they used to be get alert about the possibility of the swelling soil. अच्छा, फिर ये होता है कि लाइक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तो उसमें आपको खास टेस्ट करवा लें जो स्वेलिंग को या कोलैप्स पोटेंशियल को या इस तरह की जो कंडीशन है उनको वो डिस्पेल कर दें ताकि एक दफा क्लियर हो जाए. That like we have for erodibility, for dispersion we have pinhole test, or we have a dispersion test, and like for collapse potential we have double oidometer test, or things like that. तो आप वो टेस्ट कर लेते हैं. और स्वेलिंग पोटेंशियल के लिए भी आपके ऑइडोमीटर के खास टेस्ट होते हैं, तो आप एहतियातन वो टेस्ट करा लें ताकि आपका वो खतरा ये शक ज़हन से निकल जाए. जैसे आप डिज़ाइन रिव्यू कर रहे हैं, कोई आपका EPC कॉन्ट्रैक्ट का आया है and you have certain doubts, so you will specify that is important. Please carry out these tests, and if tests show some positive results, then you have to take the mitigating measures. अब ये पाकिस्तान में हर किस्म की प्रॉब्लम सॉइल्स पाई जाती हैं. दिस इज अनफॉर्चुनेट कहना चाहिए या फॉर्चुनेट. ज्यादा वैरायटी की चीजें पाई जाती हैं तो लकी हो गया उस लिहाज से, लेकिन इंजीनियर्स के लिए मुसीबत हो गई है ना, बिकॉज you have every kind of troublesome condition, but fortunately you don't have, you see, at many places. ऐसी भी हैं आपकी बहुत सारी जगह जो अच्छी भी हैं, लेकिन वैरायटी सारी पाई जाती है. ये मैं आपको बता दूं, I have just found these soils at different projects. You see, of course, landslide prone areas कहाँ होंगे आपको पता है. Landslide has something to do with the slopes, with the high and steep slopes and inappropriate material. ठीक है जी. फिर आपका high seismicity areas, seismic activity is the outcome of the movement of the tectonic plates sliding past each other. आप देखेंगे कि ये एक्टिविटी कहाँ ज्यादा है, प्लेट्स की मूवमेंट कहाँ ज्यादा होती है, जहाँ उनकी मूवमेंट रुकावट कहाँ आती है. आपके माउंटेनस रीजन में प्लेट बाउंड्रीज बहुत सारी हैं ऐसी. We have plenty of soft ground and field areas, and to my amazement, almost all our major cities, you see, they have agri land around them, where you see watering has been the consideration कि ज़मीन को पानी दिए जाते हैं for agri purposes, and you have several meters sometimes of soft soil because of this watering thing. और जाहिर है आपने कई दफ़ा कंस्ट्रक्शन करनी है, बिल्डिंग है, रोड है, या और आपने चीज़ बनानी है तो आपको मसला पेश आ जाता है. इसके अलावा within the cities, you see, whichever our historical cities are, there has been a tradition that the past civilization, not only in Pakistan but in the world too, they used to be developed on the banks of rivers, because water used to be the main source for the civilization, for the survival of human being. तो जितने दुनिया में आप देखें बड़े शहर, अगर आपने दुनिया जिससे ज़्यादा फिरी है उनको पता होगा कि हर बड़ा शहर जो है उसके साथ बड़ा दरिया होता है. अभी भी ऐसा ही है. अब ये चाइना में ये पैटर्न देख लें, आप फार ईस्ट में देख लें, आप यूरोप में देख लें, अब इंडिया पाकिस्तान में देख लें, सब जगह. तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ होता ये था. अब हमारे पाकिस्तान इंडिया में ये ट्रेंड था कि बुजुर्गान होते थे और उनकी एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट on the banks of the river certain lands used to be raised by gradual filling of soil over the years, which is in historical terms over the years.
तो वो फील्ड के एरियाज बहुत ऊंचे ऊंचे हो जाते थे। अब हमें वो लगता है बाद में कंस्ट्रक्शन हुई, जैसे व्हाट इज वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर। लाहौर का रिवर रावी एक जमाने में उधर से बहता था बादशाही मॉस्क के साथ। इतना थिक फिल कहाँ से आ गए 10-10 मीटर के, even at places there are more than 10 meters thick fill. And when we have fill which is uncontrolled or which is dumped and it is not old and it doesn't have those ingredients which can make it strong in due course of time, it remains weak then. जैसे लाहौर के वॉल्ड सिटी का फिल तो बहुत सारी जगहों में वीक है और हमें पता है कि उसमें प्रॉब्लम शदीद आते हैं फ्रॉम कंस्ट्रक्शन point of view. But likewise in other cities also, like आपका पेशावर जो है, it has serious issues of fails at a number of places. Even you have the indications of like 20 meters thick fail. मुल्तान में बहुत ज़्यादा fail है. इस साहिवाल पाकपतन की तरफ we have a lot of fail where Baba Farid's shrine was once to be redesigned and I was in charge of the work. Can you imagine? We found there 20 meters thick fill at Baba Farid's shrine location. हमें मुसीबत पड़ गई, उसमें एसपीडी आ रहे थे 0, 1, 2, कहीं कहीं 3 भी, ऑल द वे 20 मीटर्स। अब इसमें क्या करें? अब लाइट स्ट्रक्चर्स और हैवी स्ट्रक्चर्स दोनों बनने थे, सो अकॉर्डिंगली द मेजर्स different measures were taken. Yani for light structures, we could make the replacement with the non-settling soil. उसको सॉफ्ट सॉइल सेटलमेंट वाले सॉइल को निकाल के रिप्लेस कर दिया एंड देन प्लेस लाइटर स्ट्रक्चर लाइक अ कॉलोनेड। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय कॉलोनेड। वो जो पुराने स्ट्रक्चर में बरामदे टाइप स्ट्रक्चर होती है तो कॉलोनेड कहते हैं, और अदर लाइट वर्क सिंगल लेवल स्टोरी। But where the big mosque of the shrine was to be constructed, we had to place that on heavy piles, heavy drilled board piles of 4 feet diameter. तो ये एक वैसे मैंने आपको they were taken. There were two mounds at Pakpatan. One was the upper mound where the light structures were built. Fill under the upper mound was 20 meters thick. At the lower mound where mosque was to be constructed was having a 10 meter thick fill there. So the piles bypass the thick fill 10 meters plus like another 10 meters, something like this, 20 meters deep pile. 4 meter diameter, yeah. 20 meters deep. Yeah. To develop reasonable skin friction. तो उसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि फिल में अगर आप ज़्यादा लार्ज डाया पाइल इस्तेमाल करें तो आपकी नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन भी तो बढ़ सकती है। तो एक ऑप्टिमाइजेशन की गई बिकॉज यू नो व्हेन यू स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग टू मेनी smaller dia piles in replacement or in compensation of the large dia pile, वो आप कंस्ट्रक्शन का टाइम फिर इतना लगा देते हैं, या तो आपके पास बड़ी ऑटोमेटिक चीजें हों, यू नो, वो उसको भी देखा गया था, लेकिन the optimum design was selected at that time. किसी को बात करूं मैं पायलट टेस्ट के हवाले से, I think you people should have some. Well, that was excavated with reverse rotary. हाँ, 4 feet is not an issue with reverse rotary. आम कंस्ट्रक्शन हो जाती है. Collapse dispersive soils, those soils which whose particles tend to get dispersed even in the steady water. This is contrast to the erosion. Erosion takes place, as you are very familiar, in streams, rivers, canals, when the water is flowing. And it drags on the soil particle and the soil's particles get dislodged हो जाते हैं ना, तो वो होती है erosion depending on the force of the current of water. अगर आपकी बहुत तेज रफ्तार ज्यादा फोर्स है, हैवी पार्टिकल में डिसलॉज हो जाएंगे, अगर कम फोर्स है तो हल्के छोटे पार्टिकल लाइक सिल्ट्स, क्लेज। तो अगर पानी चल ही ना रहा हो, से देयर इज अ स्टेशनरी रिजर्वायर ऑफ अ डैम, फर्ज किया a pond or stationary, even then the particles are getting dislodged. That is the dispersive soil. It has particular chemistry in which the percentage of the sodium ions, called in chemistry exchangeable sodium ions, are very high compared to the presence of the other ions like
पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, सोडियम जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे गड़बड़ हो जाती है, डिस्पर्शन इज इंड्यूस्ड। फिर कोलैप्सिबल सॉइल्स, ये भी मैंने बात की थी, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरिड एरियाज वेयर देयर इज लेस रेनफॉल। There are temporary bonds between the particles at their contact points. Soils are an agglomerate of particles, है ना? Particles constitute soil. Soil grained होते हैं. अगर ऐसे हो जाए that where there are contacts, there are temporary bonds. They are also called temporary wells. They are of silt or clay or salts. In between there is air. And you can imagine इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनी हुई हो, तो दिस इज a characteristic of the area which experiences less rainfall, यानी ये हिले ही नहीं, इसी तरह के ये, और ये they start getting hard, keep getting harder, you see with time, hard होते जाता है ये. If you put load in static condition, in dry condition, they can be a reasonable load, but when they get wet, there is a sudden collapse. एकदम से air void khatam, these bonds they break, they get dissolved, called giving away of the bonds. बड़ी खतरनाक soils होती हैं ये, and I encountered a patch of these soils along the 52 kilometer long canal of Ghazi Brotha hydropower project. I remember in those days because I used to do the geotechnical of the power channel. We used to call that power channel for the Ghazi Brotha project. उसमें भी collapsible soils एक हिस्से में पाई जाती थी. तो एक है ये liquefiable soil which lose their shearing strength upon shaking. They are the liquefiable soils. Why it so happens? Because when they are shaken, they have a lot of water, and the earthquake shaking is vigorous, and the pressure which is being taken by the soil mass, you see, particles get separated, and water starts getting the pressure called incremental increase in pore water pressure. तो वो तो काम खराब हो जाता है. The soil behaves like a liquid for a few seconds during the currency of the earthquake. आगे आ जाइए. We have been encountering sheared and fissured clays, such hard clays. The London clay is also a hard clay. I've named London clay because the literature is full of its properties. A lot of work has been done. But akin to the properties of London clay, we also have hard clays. These hard clays have fissures or cracks in them. In different directions they could be. Because the cracks are a sign of stress relief. किसी भी डायरेक्शन में क्रैक हो सकते हैं एक फॉर्मेशन में. So this crack took place because of the relief of the stress like this. इसमें stress का relief ऐसे हुआ. That's why the crack is there. Tendency to rupture. Normal उसके normal direction में, to the normal of the crack surface will be the direction of the forces which have made the crack to develop. So such clays are very dangerous, and we encountered these at Bangla. Bangla Dam है ही आपके shear clays के ऊपर ज़्यादा. Which we call interbedding of sandstone and shale. So that shale, technically in engineering terms, are shear clays. अब shear clays में ये होता है, ये अभी आगे आपको बताते हैं, that a lower value of the stress in design, lower value of the strength governs in the design. ये हमें मालूम कर लेनी होती है. If by mistake we design such structures on a higher strength basis, तो वो fail हो जाएंगे. We have to go for the lower strength. Likewise, we have sensitive soils, soils which lose their strength upon shaken. They are having structure like a card house. Card house आप समझते हैं ना कि कार्ड आप जमा कर लें ऐसे 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 ऐसे. And there is a lot of water and air in the empty spaces between the cards. If they are shaken, more vigorous is the shaking, then more serious is the loss to the sensitivity.
they are normally close to the seas or the areas where there are high concentration of salts. Marine deposit तो typically बहुत synthetic होते हैं और दुनिया में ये सारी दुनिया इससे भरी हुई है, हमारे मुल्क में भी कुछ जगहों पे ये पाए जाते हैं. Dune sands, wherever we have deserts, there is a tendency for the wind to blow and take the sand particles with the blowing of the wind. Wind velocity is a measure which tells us that particles of which size will be blown out. अगर विंड हल्की चल रही है तो छोटे पार्टिकल वो कैरी करेगी, अगर तेज है it will carry higher particle. And during the wind blowing, a particular landform shape results. उनकी शक्ल खास बनी होती है आपकी, they are called dunes. वो खास शक्ल बन जाती है. And from the shape of the dunes, or also called from the shape of the landform, one can say whether it is still a moving sand dune area or a dormant sand dune area. पुराना हो गया, अब यहाँ wind activity से ये उसका movement नहीं हो रही, उसमें फिर vegetation निकल आती है. So those areas are less serious. The roots of the vegetation also gives them grip. But in Pakistan we have the deserts. आपको पता है, आपके पास थर है, आपके पास भागलपुर के एरियाज है, आपके पास दूसरे एरियाज है. मिडिल ईस्ट में तो ये इशू है ही और दुनिया में भी. So we have to have certain strategies for construction in the sand dune areas, for construction of roadways, for structures. Then a very common situation, soils containing injurious chemicals. Because in engineering we use cement and concrete commonly for our structures, and earth or soil is the other material. उस बेचारे को तो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, soil को थोड़ा फर्क पड़ता है unless there is water flow and the salt start getting leached out. But primarily आपका concrete works, आपके brick works, आपके steel, reinforcement steel, उसमें they get attacked by the presence of certain salts, and the most notorious are these sulfates and chloride. Sulfates would attack cement and the bricks, whereas the chloride would normally attack reinforced steel. And if there are aggregates, fine or coarse aggregate present in the concrete mix, which can undergo another serious reaction called alkali silica reaction, ASR. In the presence of water, a white compound is formed which is having swelling nature, and our certain structures got attacked by alkali silica reaction in Pakistan. The most notorious example has been that of Warsak Dam. The swelling practically takes place by alkali silica reaction by formation of a white gel. तो ये चीजें भी देखनी होती हैं. Again, इन चीजों में, इन सब problematic soil जो मैंने बयान की है, if you take care of water, if you make the surface impenetrable for water, पानी अंदर जाए ही ना, if the water doesn't seep in, these problematic ground conditions will not show their problem. वो ठीक रहेंगे. Even alkali silica reaction develop नहीं होगा अगर अंदर पानी नहीं जाता. Water is essential for the reaction to start. Even the problematic soil like swelling or collapsible soil will be behaving like a harmless soil if it is its top or sides are made impervious, impenetrable for water. तो पानी का देखें ये कंट्रोल कितना जरूरी है. Dispersive soil में dispersion will not take place even if the soil is dispersed, if we have some measures taken so that soil particles cannot move away. आप वहाँ filter लगा देते हैं या capping कर देते हैं, things like that. Then we have marshes and wet areas and swampy areas and shallow groundwater table regions. Within the soft soils are present very, very weak marshy areas which cannot bear even the weight of a human being. अब खड़े होंगे तो अंदर धंसते जाएंगे. और मैं एक दफा इथियोपिया में बहुत मुश्किल से बचा था. उनका एक टाउन है गैम्बेला. So there was a rice project, Alvaro rice project. So I was at the site. मैंने कहा ये black सी soil है.
एंड जेन में आया कि इंडिया में ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, इसको जरा जाके देखते हैं। सरफेस पे तो ड्राई लग रही थी, शुक्र है मेरे पास साथ एक दो पीछे लोग थे, मैंने जो ही पाँव रखा ऐसे ही, तो मैं ये तो ज्यादा सॉफ्ट है, चलो आराम से रखते हैं। जो ही मैंने दोनों पाँव रखे, आई स्टार्टेड मूविंग इन एंड देन आई वाज पुल्ड आउट। ये तमाशा हो जाता है रियली। So certain conditions are very very dangerous, and the engineers come across such condition. Sometimes the water tables are very high, the ground is not swampy but the water table is high and it has to remain so permanently. उसका क्या करें, अभी आगे बात करेंगे। Marshy swamps and frozen ground. Frozen ground is a characteristic of our northern area. So two types of ground freezing conditions exist. One is the seasonal. ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ऊपर का हिस्सा जो है ग्राउंड का that gets frozen. And the other where 12 years a month the soil will remain frozen. So those areas are called permafrost. Permanently frost में है। अब होता क्या है इनमें ग्राउंड फ्रीजिंग में, वो जो हमारा मैट्रिक का केमिस्ट्री का लेसन था वो काम आता है ना, कि when you see contraction takes place, when temperature lowers, contraction takes place. But in water, such is the molecular structure that when the temperature drops from 4 to 0 degrees centigrade, in place of contraction, expansion takes place. उल्टा हो जाता है। उस phenomenon की वजह से वहाँ heaving, ground heaving, then breaking of pipes and cracking of structures is there. वो क्या करते हैं, या तो उनको रिमूव कर लेते हैं उन सॉइल्स को और फाउंडेशन अपनी नीचे ले जाए, फ्लोर्स को नीचे ले जाए या फ्री ड्रेनिंग का कोई इंतजाम कर दें कि जब फ्रीजिंग होने लगी है तो उससे पहले वाटर गेट्स ड्रेन्ड आउट. All soils are not affected badly by the freezing ground condition. The good draining soil like sands and gravels, they would be least affected. उनका से पानी निकल जाना तो उन्होंने फ्रीजिंग में कौन सा तंग करना है, ठीक है ना. Clays, the cohesive soil, with high clay content, they don't allow water to get in easily. उनमें पानी ज़्यादा गया ही नहीं होता आमतौर पे, उनमें भी मसला नहीं है. It is the silt particle, silty soils, which get the most maximum effect of ground freezing. उनमें भी तरीके हैं कि उसमें हम उसके फ्रीजिंग के जो इफेक्ट्स हैं वो कम करें. हमारे मुल्क में तो नॉर्थ में कुछ आपकी स्कर्दू वगैरह में बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर एंड नेगेटिव एक्टिविटी हो जाती है टेम्परेचर में. तो नॉर्मली यू से पुअर पीपल दे मेक देयर नॉर्मल स्ट्रक्चर और कुछ हमारी सड़कें बन गई. बट इन द वर्ल्ड यू सी पीपल हैव डन रिमार्केबल वर्क्स लाइक इन कनाडा, इन कंट्रीज लाइक नॉर्वे भी फ्रोजन रहता है and they are very very soft ground. हमारे तो कुछ भी नहीं है. So they have really developed these systems to be very effective for work in their areas. आगे मैं आपके साथ थोड़ा चाय के 2 घूंट ले लिए जाए, चले साथ साथ बात करते हैं. मेरे पड़ी पड़ी ठंडी हो जाएगी ना. Now if we talk of the kind of harm that this soil can do, आवाज आ रही है इसकी? हाँ. So structures को होना क्या होता है, ज्यादा बैठ जाएंगी we call settlement, या अचानक ही बहुत तेजी से बैठेंगी we call that collapse. स्लो बैठेंगी या तेजी से बैठेंगी, कभी हॉगिंग की तरफ टेंडेंसी होगी, कभी जो है वो सैगिंग की तरफ होगी, ठीक है जी. और कभी ये है कि स्ट्रक्चर का, अगर if we talk about structure, ऐसा भी तो हो सकता है ना, if this is ground and this is a structure, ये भी हो सकता है कि there are differential conditions with regard to soil type, और यहाँ ये हिस्सा weak हो इतनी soil, तो उस केस में ये तो इंटैक्ट रहेगा, यहाँ करके ऐसे करके इसकी हॉगिंग की टेंडेंसी होगी, ठीक है. तो हॉगिंग की टेंडेंसी इज नॉट यू सी नेसेसरली बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग सॉइल. आपका एज या बिल्डिंग का इस तरह से डिफॉर्म होगा
तो इधर हॉक हो गया ना, यानी नेगेटिव स्ट्रेस ऑन द अपर फाइबर, वो जो बीम का कॉन्सेप्ट था उस तरह आ गया। अब अगर हम इसको वेरी प्लेन फॉर्म में देखें तो इफ यू हैव ए स्ट्रक्चर in which a ground tends to hog like this, and in contrast another structure where ground tends to sag like this, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इस तरह की सैगिंग में लोअर, जैसे बीम में था कि लोअर फाइबर गेट द टेंसाइल हायर टेंसाइल स्ट्रेसेस, तो आपका स्ट्रक्चर जो है फिर इसमें क्रैक्स किस तरह के आएंगे? पहले तो ये उसी बीम के पैटर्न में, जिसमें आपका वो आप समझते हैं कि एक न्यूट्रल एक्सिस होता है, ठीक है, फिर आपके डायगोनल क्रैक्स ऐसे आएंगे, ठीक है, where the diagonal cracks will be located in the upper zone or in the lower zone, ज्यादा कहाँ होंगे? सैगिंग में नीचे होने चाहिए ना ज्यादा, है ना, and they should be open, you see if they are diagonal they should be open at the bottom and closed at the top. ये क्रैक्स की स्टडी जो है, आई हैव अ सेपरेट टॉक ऑन दिस समडे, तो ये एक अलग सब्जेक्ट है। इसी तरह जब ये होगा तो हॉग में क्या होगा? अपर मोस्ट फाइबर्स, इफ वो न्यूट्रल एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट, तो आपके अगर डायगोनल क्रैक बनता है तो इट विल बी मोर ओपन ऑन द अपर मोस्ट साइड and it will narrow down or close up as you move down. तो ये बड़ी interesting study है, but things are not that simple. In actuality, when we have structures, say we are having a building, they are abutting. You see, there are abutting at the back, slab elements and wall elements. They offer restraints, resulting into redistribution of crack pattern. वो समझना पड़ता है बैठकर कि ये हो क्या है। यू हैव हॉरिजॉन्टल क्रैक्स आल्सो, फिर इसमें स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी हो जाते हैं। मैंने तो बहुत आपको सिंपल मॉडल एक बताया ना, तो बहुत सारी लाइटली लोडेड स्ट्रक्चर्स में इस मॉडल से आप पकड़ लेते हैं कि ग्राउंड को हो क्या रहा है। अच्छा, ये बाकी टिल्टिंग, यू नो, if the ground has lost strength or it is of low strength, tilting will take place. Because tilting could be because of the uneven load. ये स्ट्रक्चर है, इसका हो सकता है यहाँ लोड ज्यादा हो, इस तरफ कम हो, या ग्राउंड इस तरफ स्ट्रॉन्ग है इधर वीक है, तो उस तरफ टिल्ट ही होना है ना। अब लीनिंग टावर ऑफ पीसा में क्या है, कोई बताएगा मुझे? आपने पढ़ा ही होगा। हाँ, डिफरेंशियल सेटलमेंट है, किस वजह से इंड्यूस हुई होगी? Why differential settlement has been introduced in the Leaning Tower of Pisa? स्ट्रैटा का डिफरेंस है। एक तरफ आपके, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो एक तरफ आपके थिकर डिपॉजिट्स हैं सॉफ्ट क्ले के, एक तरफ कम थिक है। तो इटालियन साइंटिस्ट ने कुछ 15-20 साल पहले एक अजीब काम करने की कोशिश की कि जिस तरफ जैसे ये टावर है और ऐसे है, तो जिस तरफ उसका झुकाव, ये वाली साइड जो थी ना, जैसे ये वाली साइड है अप साइड, वहां से उन्होंने बोरिंग करके मटेरियल को निकालने की कोशिश की। That if we take the soil out from under the foundation from this side and with the steel cable try to pull it back, तो बड़ी उसमें, you see, lot of effort was spent, a lot of money, and it took several years, and they could restore only half a degree in that effort. उसका पढ़े ना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग केस हिस्ट्री। तो बड़ा मुश्किल होता है, कहने का मकसद ये है इन इंजीनियरिंग, वंस अ बैड वर्क इज डन और सम मिस्टेक इज देयर, टू अनडू द मिस्टेक, या उसकी जो मिटिगेशन है ना, हम मिटिगेशन की फौरन बात कर लेते हैं, इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। मुझे याद है काफी साल पहले, ये जो लाहौर में वॉल्ड सिटी है ना, बादशाह मस्जिद के पीछे, तो वहाँ एक बाजार का नाम है सैद मीठा बाजार। So one day I was reported that a hospital building constructed anew, about 4-story, has developed very serious cracks. It was designed by government department, LDA, by LDA. उन्हीं का डिजाइन था, उन्हीं की कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन वो उन्होंने फिर नस्फा को बुला लिया, मैं उस टीम का लीडर था, तो वी अप्रोच सैद मीठा बाजार, उसमें जो क्रैक्स के हालात थे,
पता चला इन्होंने किया क्या है, they had made a 4-story structure apparently on a mat foundation, कि ये तो नीचे मैट है जी, वीक फील है तो हमने तो मैट दिया है, इस कदर बुरे क्रैक्स है उसमें, and I told them that इसकी रेमेडिएशन नहीं कोई हो सकती, ये इसको पूरा आप डिसमेंटल ही कर लें, ये आपका नुकसान हो गया। So remediation becomes in civil engineering sometimes so costly कि आप कहते हैं कि इसको छोड़ ही दे, आपके सारे दरवाजे जैम हो गए, खिड़कियां जैम है, आपके फर्श क्रैक है, आपकी दीवारें क्रैक है, आपने क्या करना है, और उसमें सेफ्टी का खतरा फिर भी रहेगा। तो उन्होंने मैट प्रोवाइड करके वीक फील के ऊपर तो क्या हरकत की थी, हरकत ये हुई थी उनसे, the fill was about 40 feet thick there, very wet fill, उसके ऊपर उन्होंने इस तरह की, अब वर्ल्ड सिटी में, लाहौर में या कहीं भी देयर आर एरिया और स्पेस लिमिटेशंस, तो तकरीबन इस तरह की शक्ल की मैं आपको बताता हूँ। अब ये एरिया अवेलेबल था, इसको वो मैट कह रहे थे, दिस इज वीक नेक, दिस हैड गिवन वे, एक स्ट्रक्चर का धड़ा उधर एक उधर, and that resulted into serious cracking. कहने को तो ये मैट लगती है कि सारा इकट्ठा एक ही है, लेकिन जो वीक नेक है, it was neither made strong nor some measures were taken to cause a redistribution of the structural load in such a way कि इसका कुछ हिसाब हो जाए। नीचे तो 40 feet thick fill था, wet in a wet very weak condition। अच्छा जी, so collapses take place, tilting and cracking, and dampness, इसका क्या करें, is a very common thing. Presence of dampness in structures is such a common thing, it has never been addressed properly, and the remedial measures for it are very simple. It has a lot to do with the workmanship. असल में रोल इसका वर्कमैनशिप का होता है, some small things have been ignored, लेकिन अब बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं। When I was a young engineer, I used to listen from people, from my senior engineers, कि ये बेसमेंट तो घर में ना बनानी नहीं चाहिए, इस वजह से कि इसकी टेम्परेचर कंट्रोल होती नहीं है। Then I used to be astonished कि ये कैसे हो सकता है, कि मतलब ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि कंट्रोल क्यों नहीं हो सकती। अच्छा, ये घरों में डेफिनेटली तो आनी होती है, ये आ जाती है, हमारे इंजीनियर्स कहा करते थे। Again, I used to disagree as a junior person, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि इसका हाल क्या होगा, इन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी। फिर मैंने एक और उड़ती स्टेटमेंट सुनी, अभी मेरा ख्याल 7-8 साल का एक्सपीरियंस था, कि फिल जो होता है ना, फिल, इवन आप सैंड या इस तरह का फिल भी ले ले, इसके ऊपर तो बनाना नहीं चाहिए कभी। नेवर commit the blunder of making any structure with this kind of fill, उससे तो क्रैक होना ही होता है। Again, I would never agree in my mind, मान लेते थे उनकी बात काम करने के लिए कि सीनियर्स कह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आती थी। फिर बाद में जब देखा तो पता चला कि if we talk of fill, कि people don't compact the fill diligently in a proper way. When we talk of placing fill, there is a difference which we should draw between the engineered fill and a non-engineered fill. अगर आप बड़ी-बड़ी thick layers में compaction का ख्याल किए बगैर डालते जाएंगे और structure बना लेंगे, यकीनन that will develop serious cracks. और ऐसे ही हुआ, और आजकल भी जो ऐसे कर रहे हैं ऐसे ही होता है। But when you take properly good free draining good material and you compact in layer and use appropriate heavy machinery और thin enough layers रखें, not thick layers, और आप layers में कंस्ट्रक्ट करें और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करें, nothing is going to happen. That kind of engineered field will be much better than the natural soil, and I have done this at a number of places under my control and nothing ever happened. सबसे आखिरी मिसाल जब मैं इस पे कर रहा था काम, मेट्रो ऑरेंज लाइन लाहौर, तो डेरा गुजरा, आपको पता है ना, दिस इज 27 किलोमीटर रूट फ्रॉम अली टाउन टू डेरा गुजरा। There's a variety of host of different ground conditions on the way. Lahore is a historical city. ये तो इतना आसान काम ही नहीं था. From geotechnical point of view, there's a lot of areas.
तो वहाँ स्टेशन जो एंड्स पे बनाने थे ना, यार्ड्स और सारा, तो वहाँ ग्राउंड को हिस्सा अलग है सर आएगा the ground. Yes sir, but things have been improved gradually every time. And thank you very much with your efforts. मैं देख रहा था तलाल को बता रहे थे, तो we were talking about the Lahore Metro Orange Line. तो दोनों ends पे the end had to be raised to provide for the service areas, and so much so a fill like 4 to 5 meters has been provided. That is all engineered fill. What I did was I made a very strict quality control. आपको quality control अच्छा कर ले fill पे तो बिल्कुल ना घबराएं. 5 meter का fill का मतलब होता है like more than 16 feet and you are making structures on such fill. तो टेक्निक क्या है? यूज द फ्री ड्रेनिंग गुड मटेरियल, compact in small thin layers, and monitor the testing the density you see during compaction. And when a certain section of the field is constructed, you carry out your routine penetration resistance tests like CPT or SPT और उसको continuous monitor करें, तो फिर कुछ भी नहीं होता. Or I was told that some sensitive equipment for the repair works of the trains were to be installed on the two ends. तो उनकी जो Chinese were the basically EPC contractors there, and they were telling that the margin for the difference in settlement will be only a few millimeter. So it was met. It was precisely met. ये नहीं हो सकता कि 0 mm. I was told that I should design the field in such a way and the foundation in such a way that 0 millimeter of settlement should take place. तो ये नहीं हो सकता. In civil engineering, even your elastic strains are having some minute magnitude. आप ठीक है consolidation को रोक लें, आप उनकी जो frictional arrangement of particles का जो which causes redistribution of stresses उसको रोक लें, but nevertheless even the hardest of the rocks will develop some elastic strain. वो तो होना ही होता है ना नेचर में. Even steel will develop elastic strain, every material will develop some elastic strain. So आगे आएंगे. So इस तरह करके उसको हमने कंट्रोल किया. अच्छा, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि the environmental factors, the factors which are related to environment, they bring a lot of change to the future behavior of any structure. If there could be a rise in the water table, and conversely, if there could be a fall in the water table, it's going to affect the load bearing and the settlement behavior of the structure which is constructed over it. उसको मैकेनिकल बिहेवियर कहते हैं ना. इट्स गोइंग टू इफेक्ट द मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ द ग्राउंड. ठीक है ना, जो एडजस्टमेंट स्ट्रेसेस के साथ उसमें होनी है और जो उसमें स्ट्रेंथ की अवेलेबिलिटी होनी है. इसी तरह इफ द सॉइल गेट्स फ्लडेड, ठीक है जी, आप समझे कि उससे ग्राउंड कंडीशन विल बिकम वेट. When the soils become wet, some of the soils they reduce in their engineering characteristics excessively because of wetting. आपकी shearing strength parameters कुछ soils की, gravelly soil या granular soil की minimum effect होती है, आपकी cohesive soil में silts की तबाही हो जाती है. आप उस वेट कंडीशन के लिए अगर डिजाइन करें, खासतौर पे एम्बैंकमेंट्स, डैम्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में, तो आपको इन चीजों को खासतौर पे देखना है कि सॉइल इन्वेस्टिगेशन की गई है ड्राई कंडीशन में, बाद में वेट कंडीशन प्रिवेल करेगी कुछ हिस्सों में, कुछ सीपीजीज होंगी वगैरह वगैरह, तो वो टेस्टिंग भी अकॉर्डिंगली वेट कंडीशन में होनी चाहिए ताकि वो एक जो उसका कोरिलेशन है वो आपस में बन जाए. So good design would be in which the environmental condition whichever can take place has already been built in the design. जो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद होना है वो आपने आज उसको build कर दिया. Next. So उसी पे हम बात कर रहे हैं कि one thing is the qualitative determination of the problem behavior, other is the quantitative determination. Qualitative में ये है कि आप अंदाजा लगाते हैं, जैसे मैंने बहुत सारी बातें की हैं. Cracks could be there, while there is a tendency to collapse, and you see there is a tendency to erode because some adjacent structures have the similar phenomenon. But when you actually measure them by lab testing in numerical terms, that is the quantitative.
तो हमें तो इंजीनियरिंग में क्वांटिटेटिव टर्म में जाना होता है ना, हमें मालूम करना होता है कि एक्चुअल लोड्स के अंदर अगर सेटलमेंट होनी है या कोलैप्स होना है तो कितना होगा आगे इंच, ये बात मैंने कर दी है आगे इंच। अब थोड़ा सा लेट मी गिव एन आइडिया that in the world the different ground condition present and different countries in the world has notably done significant work depending on that what kind of collapsible what kind of problem soils have been there in those parts of the world. Primarily, I've seen that Chinese and Russians have done a lot of good work on collapsible soil, perhaps the best work, because there are large areas in China and in Russia which are prone to collapse. तो उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। नॉर्वेजियन को देखें, उन्होंने सॉफ्ट ग्राउंड पे और फ्रोजन ग्राउंड पे बहुत ज्यादा काम किया है और वही हम उनका किए हुए काम से इस्तेफादा हम करते हैं और कर सकते हैं। लाइकवाइज जापानीज और अमेरिकन ने लैंडस्लाइड और लिक्विफैक्शन के ऊपर बहुत सारा काम कर दिया है। द लिटरेचर इज प्रेजेंट, नेट के ऊपर भी है, किताबों में है। इंडियंस और अमेरिकन ने, खासतौर पे इंडियंस ने, उनके प्रोफेसर कटी ने, जिसको ब्लैक कॉटन सॉइल्स के ऊपर काम करने का, जिसको कहते हैं been the inventor to design safe works on the swelling soil called black cotton soil. एक तो swelling soil होती है, एक black cotton soil होती है, क्या फर्क है दोनों में? Anybody you can tell? पढ़ी है ना आपने, सुना होगा। पाकिस्तान में black cotton soil कोई खास नहीं होती, I've never seen, but this kind of soil gets developed, or you see results in the cotton fields which are present in the swelling soil areas. तो ये जो कॉटन की प्रेजेंस है ना फाइबर का और swelling soil का मिलाप, so that could cause black cotton soils. But in our experience, और आप देखें, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हैं हाइड्रो पावर के, डैम्स के, वो नॉर्दर्न एरियाज में भी पाए जाते हैं। एंड यू नो the biggest problem in the northern areas which is rampant is landsliding. देखें जरा, and landsliding is not should not be taken in very simple terms, because the more variety of ground and soil and rocks are there, so different types of sliding phenomenon are there. For, in a very simple term, like in clays and in soft rocks, like formations of Bari, formations of Azad Kashmir, Kohala, we have very different pattern of landslide. From the pattern of the landslide which takes place along Karakoram Highway, where we have hard rocks, barren rocks, we have igneous rocks, and we have metamorphic rocks. तो उनका पैटर्न ही फर्क है और दोनों को समझना जरूरी है कि जो जो प्रोजेक्ट आपके जहाँ जहाँ पाए जाते हैं उनके लिए जो मेजर्स लेने हैं, इवन measures for permanent slope stability and for measures which are required for temporary stability of slope during construction. Because when you have to excavate, say आपने कोई channel बनाना है, कोई 4-way structure बनाना है, you know, something like that. So some measures have to be for the temporary slope and some measures have to be taken for the permanent slope. इसी तरह swelling soils that we have met is, you see, जैसे मैंने जिक्र किया, around the Narwal area and this Nandipur area, but spread at many other places like at DI Khan, very serious kind of deposits are there, at Dera Bukti and Chakwal and Khairpur, which is in Sindh, Sialkot, Narwal, and we were too much concerned by designing Sialkot Lahore motorway, and special measures were taken to mitigate the effect of the swelling soil on that route. और उसमें क्या सबसे सिंपल मेजर ये किया था, you know, the swelling soils, they reduce in swelling potential significantly by addition of lime. सबसे सिंपल तरीका इसका, जो देसी तरीका है, जो कि वर्ल्ड वाइड भी कोटेड है, and it was experimented in the lab, addition of lime. दूसरा, addition of sand. Sands के deposits हमारे आमतौर पर मिल जाते हैं. If we take certain proportion of sand and certain proportion of swelling soil, mix them,
compact them and then replace them and then find the swell potential, it will be significantly reduced. तो हमने जब मैच स्केल पे इस्तेमाल करना होता है हमने, तो हम इस तरीके से सस्ता तरीका भी इसका बना लेते हैं. बाकी अगर swelling soils are thin in you see in their formation and what we see that if we have a structure which we can afford to take well below the swelling soil zone, it is good. That is called bypassing. जैसे आपकी हार्ट बाईपास होती है ना, तो इसी तरह आप स्वेलिंग या कोलैप्सिबल सोल को बाईपास कर सकते हैं, अपना लोडिंग सिस्टम नीचे जाके प्लेस कर दें. एंड the best measure in my opinion is to prevent the ingress of water in such soils. सरफेस से और साइड से प्रोटेक्शन करते हैं, पानी अंदर जाने ना दें. सिंपल मेजर्स हैं, आपके प्रोजेक्ट्स में आपको कभी कभी कहीं कहीं जरूरत इसकी पड़ती होगी. If we talk of collapsible soil, then of course similar measures you see like for swelling soils. Now talking of the liquefiable soil, extensive large number of projects in Pakistan, you see, they have been constructed under compulsion, selecting the ground which were close to the water bodies on liquefiable soil. And the latest discovery of liquefiable soil, in my experience, has been at Kartarpur. When we were to design and build Baba Freed's, Baba Guru Nanak's shrine there, तो वहाँ जो रावी की अपर रीचेज हैं उसमें लिक्विफेक्शन ठीक ठाक जाहिर होगी. और कितनी जाहिर होगी कि मेन उनका श्राइन का स्ट्रक्चर है, we had to support that with piles because the liquefaction was 10 to 12 meter deep there. Can you imagine? उसकी वजह क्या है? Because the zone of the earthquake, the seismic zone changes in that part. वो आपका 2A से 2B बन गया ना, तो आपके जो earthquake stresses और forces है वो आपके increase हो गए. तो अगर आपके वो loose deposits या loose or medium dense पड़े हुए हैं with very little silt content, so under high seismic shaking, they become prone to liquefaction. But I think almost at all nuclear power plants in Pakistan, at Miyawali and Cheshma, the grounds have been liquefied. उसके लिए different measures लिए गए हैं. Sometimes soil को replace किया गया, sometimes stone columns दिए गए. And at Cheshma hydropower project, liquefaction was ascertained to be like up to 20 meters below the Indus bed level. 20 meters below Indus bed level. वहाँ deep vibroflotation, that deep vibrocompaction की गई. Because if you make your important structures on liquefiable soil, they may settle excessively or they may tilt. This is for Akrako Dam at Turbat. The dispersive soils were present in excess, and they were, of course, in the coastal environment. The chemical content like sulfates and chloride would be higher, and less care at that time was taken by the design team. तो उस वजह से उसकी जो पाइपलाइन थी, वाटर सप्लाई पाइपलाइन, वो बुरी तरह कोरोड हो गई इन वेरी हाई क्लोराइड एनवायरनमेंट. जहाँ तक सॉफ्ट ग्राउंड का ताल्लुक है, ये आपको कहीं भी मिल सकता है. डिफरेंट एरिया के शहर महफूज हैं, शहरों के सुबाब में भी है, अंदर भी है, एंड एट रिमोट एरियाज आल्सो. So this would be a local phenomenon also. So we have to find out and ascertain whether it is a soft ground area or not. आगे आज थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं. When we are talking of landslide areas and our entire north is plagued with the landslide problem, there are a variety of reasons. We have inherent unstable rocks. They have their high weathering potential because of the differential temperature, freezing, thawing, high temperature in the morning. And if we talk of the conditions in the north, conditions like KKH and in the surrounding areas in Gilgit-Baltistan, at many places you see the rocks are barren. There is little or no vegetation to control them, to grip them.
against downward movement. And whenever water flows through them, it reduces the effective strength. And we also know that in the northern areas, the earthquake activity, seismic activity is high. So landsliding becomes critical as we experience, you see, maximum damage during the October 8, 2005 earthquake. But the maximum damages due to earthquakes were on the slopes, not on the flat areas. उसमें जो slopes पे structures बनी थी वो ज़्यादा खिसकी थी. So we can have a variety of measures, you see, to control the landslide issue. You see, we can have stability providing measures at the toe of the slope. We can reduce the weight by cutting on the top, and there are some solid measures available like bolting and anchoring. I'll show you. And one of the measures still which is considered very effective is that we don't construct in the red areas, in the areas which are prone to high damage, because we have been able to determine in engineering the areas which are prone to high damage and the areas which are prone to less hazard or less damage. That's called microzonation of the seismic areas. 2005 के अर्थक्वेक के बाद कुछ एरियाज की लाइक बालाकोट इन पर्टिकुलर जो है बाग इनकी माइक्रोजोनेशन साइजिंग माइक्रोजोनेशन की गई to find out those areas which are the red areas. Don't construct there because the construction would be very costly there. Similarly, there has been a parallel study later on for Murray area कि मरी में बहुत सारी structures बन गई और problem भी बहुत सारे हैं. So microzonation has been done for its landslide zonation in different parts of Murray. So उसमें 4 zones अभी तक जो है ना वो बनाई गई हैं कि कुछ areas are prone to high landslide activity, some are absolutely safe and some carry the intermediate status. Like वो development के लिए जब आपने कोई भी project करना है उसके लिए you get the preliminary feedback from that kind of work. आगे आई थी तो अर्थक्वेक से सबसे ज्यादा डैमेजेस जो हैं वो लैंडस्लाइड की फॉर्म में ही होते हैं और हमने खुद अपने मुल्क में भी यही देखा है पाकिस्तान में भी यही हुआ है सबसे बड़ा जो अर्थक्वेक 2005 का था आगे थी तो थोड़ा सा इसकी लैंडस्लाइड की जरा देख लेंगे ये बेसिकली यू सी वेयर इट टेक्स प्लेस दिस इज the start of the slide here you see the head area and its first slip on the top near the head is called scarp. आपने सुना होगा ना scarp main scarp and there could be secondary scarp you see after one slide there could be another slide in the slid area so sometimes there are series of slides you see तो ये आपके जो vertical surface expose हो जाती है ना तकरीबन vertical this is called scarp. Then, depending on the type of material and the moisture present, the sliding could follow a circular or curvilinear path. More cohesive the material is, more it is likely to be a part of circle. But the interesting and important thing is that this becomes the toe and the foot of the slide. Whenever there is a slide, the correct manifestation of the slide is to the identification of the scarps and the ground upheaval at the toe. toe के ऊपर ground ऊंचा हो जाता है आप साइड पे जाके आराम से समटाइम ये देख सकते होते हैं स्लाइड एरिया में अगर कंस्ट्रक्शन करनी है एंड इट इज पास स्लाइड एरिया एंड स्लाइड हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस सो दैट इज द upheaval here and there is a movement starting here and in between if there are transmission lines or poles and trees they will be distorted you see they will be damaged you see वो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे you see they will be losing their alignment again. Likewise we can expect slides in many different conditions. Some are the natural causes, others are the man-induced or anthropogenic causes. यानी कि आप सड़क बना रहे हैं या आपने in a hilly area you have carry out excavation and you didn't take care for the temporary retention of works
तो वो चीज़ स्लाइड हो जाएगी। जैसे कि ये देखिए रोड स्लाइड नीचे आ गया। और सबसे बड़ा तमाशा लगा था कुछ साल पहले मरी में एट जीगा वैली, where under heavy rainfall, steep slope was excavated at the toe. अब आप स्टीप स्लोप है, वीक मटेरियल है, ऊपर से बारिश हो रही है, आपने इधर से उसका टो एक्ट्स एज अ सपोर्ट। इफ यू रिमूव द सपोर्ट, जैसे आप खड़े हैं जमीन पे और सपोर्ट नीचे से निकाल दें तो नीचे धड़ाम से नीचे आएंगे ना, तो वो अगर आपने टो रिमूव कर दी तो दैट इज व्हाट हैपेंड एट जी का वैल्यू। होना ये चाहिए, आपके बहुत सारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी हैं इनमें टेम्परेरी एक्सकवेशन होती हैं, so we have to be careful that when temporary excavation done there some scheme has to be there to, which should be provided by the contractor so that slipping or sliding doesn't take place during the construction phase, ताकि वो और गड़बड़ ना हो जाए। उसको होल्ड करने के लिए उसने क्या दिया है, सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप उसको छोटे पैचेस में करें, नंबर वन। नंबर टू, you can have some kind of gabions at the toe you see at the same time जब आप काम कर रहे हैं। And thirdly, if necessary, one can have some bolting or anchoring arrangement into the rocks ताकि उसको hold करके चले। And the fourth measure is that if the area is likely to receive heavy rainfall during construction, you have to have a proper drainage design implemented. डिजाइन करें, कैचमेंट्स में एरिया को डिवाइड करें कि इसका पानी इधर जाए, ये ड्रेन है इसका पानी इधर जाए, इनका दो ड्रेन्स का पानी इकट्ठा हो कि मेन ड्रेन में आए एंड इट इज डिस्पोज्ड ऑफ क्लियरली एंड सेफली, because the water can do a lot of harm. Accumulation of water in an unscrupulous manner during construction can damage the project. पानी को संभाल के रखना होता है। बाद साइड्स बड़ी सेंसिटिव होती हैं पानी के कंट्रोल के लिए, इस चीज को आप ध्यान में आपने जरूर रखिए। आगे आइए। Just a picture you see अताबाद, आप देखें कितना खौफनाक स्लाइड ये हुआ था 2010 में। या टेम्पररी आपका जो अर्थक्वेक डैम जिसको कहते हैं वो बनना, फिर उसकी स्टेबिलिटी की कोशिश होती रही। आगे आए जी। इस तरह के प्रॉब्लम, although it is not from Pakistan, but if you visit the northern areas, slipping of roads and this kind of pattern movement of the slide down the valley is very common. So one major precaution in such problem grounds is not to excavate or cut the mountainside to widen the roads or you see or to make the construction, rather to remain as much on the valley side as possible. जितना आप valley side में रहें उतना अच्छा है। You can have deep piers, deep columns, construction उधर करें, उसको ना छेड़े। And remaining valley side is not the only trick. Placement of the foundations, say if it is through piers or drill shafts, deep into the stable formation. क्योंकि if this is a mountain और ये एक रोड है जो कि ऐसे करके फर्ज किया स्लिप ऐसे हो गई या ग्रेजुअली स्लाइड हो रही है, so whatever measures we have to take into the ground which is located below this area, यानी आपका जो सिस्टम यहाँ जाएगा और फिर इसके ऊपर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दैट इज सेफ। If gabion structures like people do it, you see even government department बेशुमार slide area जो है slit mass के अंदर भी रखना शुरू कर देते हैं तो वो फिर ग्रेजुअल नीचे नीचे जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे। आगे आ जाए। If we look at the mechanism, क्योंकि आप stability analysis बहुत सारे करते हैं, I've just shown for the sake of simplicity a planar surface. It could be a curvilinear or it could be any. But basically we are aiming at a factor of safety, which could be the ratio of the strength or the resisting forces or moments, or in other words the strength of the material
divided by the destabilizing forces or moments, which is the force. So strength divided by force. होता यही है सारे लिमिट इक्विलिब्रियम मेथड में, आप चाहे रॉक साइंस इस्तेमाल कर रहे हैं, स्लाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेक्सिस का लिमिट इक्विलिब्रियम में इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लैग कर रहे हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग, ठीक है ना जी। और उसमें जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉर्गनसन एंड प्राइस कर रहे हैं, आप टेलर कर रहे हैं, बिशप कर रहे हैं, तो बेसिकली आगे आएंगे, एक तो मेन चीज आ गई। बट इन स्लोप वन टर्म इज कॉल्ड बैक एनालिसिस, अदर इज द रेगुलर एनालिसिस। अभी मैंने आपको आई शोड यू द failed shape of the slope. It is possible to capture the failed shape of the slope at site by surveys. सर्वे करके उसकी शक्ल आप you can draw on the paper, because the starting point is known and the end point is known because of its features. देखिए ना, हमने end point is known because of the accumulation here, and this is known because of the scarp here. So if we capture this and capture this, then kinematically we can develop a surface passing through it for a factor of safety of 1. In the same software or whatever procedure you are using, if you fix the 2 points, draw a surface and find out that what are the strength parameters C and phi for us factor of safety of 1, जो कि आपने मालूम करना है. That will give you the failure of the operating cohesion and angle of internal friction of the soil medium, of the ground medium. इसको कहते हैं बैक एनालिसिस. बैक एनालिसिस इज वेरी हेल्पफुल because it tells you the capturing of the real C and phi from the real slope failure, and it can be applied to the other potential areas in the vicinity. ये पैरामीटर ना लैब टेस्ट किए बगैर आपने निकाल लिए, and we have been using this. कभी आपने किया बैक एनालिसिस, किसी ने किया होगा, है ना? अच्छा, हाँ, कभी मौका ऐसा मिले तो देखिएगा, आगे आ जाएं। और इंजीनियर्स यू सी, खुशी नहीं होती आपको उससे? सर वो जो खुशी होती है उसके पीछे स्ट्रेस आ रही होती है ना, वो बड़ी बड़ी होती है। करो, ठीक करो, अभी करो अभी। बेसिकली वो एक अलग वो है चीज, लेकिन बेसिकली फॉर engineers you see, when you have such, I mean, critical things, you start enjoying, otherwise the things get boring. So, but I used to be very happy engineer when the piles used to fail during the load test. डिपार्टमेंट वालों को, ओनर्स को बख्ता पड़ा होता था, वो कहते थे पाइल फेल हो गया, ओ इनका डिजाइन ठीक नहीं है, इस वजह से फिर फाइल फेल हो गया आपका. And I used to tell them that is what I am waiting. I want the pile to fail because I want to get the maximum strength out of it. आप क्या बात करते हैं, मैं तो उसे फेल कराना चाह रहा हूँ ना, और डाले लोड में, कहता था और डाले है, और उसको करें, सेकंड साइकिल में करें, फेल तो करें इसे, because that will result into economical design. and हम तो फेलियर हो, इस तरह के जो कंट्रोल फेलियर है उससे खुश होते हैं. सर आपका क्लाइंट भी अकलमंद था, आप नॉट ऑलवेज, पैसे भी हो, फिर भी था तो लाहौर में ना, कोई क्लाइंट अकलमंद नहीं होता, सॉरी. फिर भी थोड़ा बहुत समझता था, पैसे तो देता था ना सही सेट करके, ना पैसे मिलते, साली पूरी जो है ना वो घर की मिल रही होती है, और कुछ नहीं मिल रहा. क्लाइंट्स में ना कुछ चीजें कॉमन होती हैं, किसी भी क्लाइंट को ना अच्छा ना समझे. हाँ, अगर आपने क्लाइंट्स की डिफरेंशिएशन करनी है ना, तो गवर्नमेंट क्लाइंट्स और प्राइवेट क्लाइंट्स, यस आई वुड एग्री विद यू, वहाँ फर्क है कि दिस इज अ प्राइवेट बॉडी ऑफ प्राइवेट क्लाइंट्स, ये बॉडी ऑफ गवर्नमेंट क्लाइंट, दोनों के ना अगराज और मकासद बड़े फर्क है. बॉडी ऑफ गवर्नमेंट क्लाइंट्स में भी बड़ा फर्क है. हाँ, वो भी है. आपका आर्मी आपके क्लाइंट है, वो एयरफोर्स है. अच्छा, आर्मी के अंदर भी क्या आर्मी, पाकिस्तान आर्मी आपकी क्लाइंट है या पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए आप कुछ कर रहे हैं? यू विल कम अक्रॉस मोर डिसेंट पीपल
इन पाकिस्तान एयरफोर्स। मेरा एक अपना ज़ाती तजर्बा भी है ना, जो आप आराम से जेंटलमैन गुफ्तगू आप कर सकते हैं। यू आर डीलिंग विद पाकिस्तान आर्मी, पता चलेगा वो बड़ा मुख्तलिफ माहौल है क्योंकि अंदर बंद कर दो, मतलब इस तरह की बात है, आपको बम गिरा दें हम। अच्छा एनीवे, ये बात तो हो गई बहुत लंबी, तो आपका लेक्चर का मेरा टाइम हो गया खत्म, तो इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। कितना लगेगा? आई काफ़ी है अभी, आप बताएं मैं कितना कंटिन्यू कर सकता हूँ, मुझे अलाउ करें। नहीं अभी काफ़ी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, और आई वांट टू नरेट सो मेनी केसेस विद सम केस हिस्ट्रीज इन द एंड। मैंने 2-3 पॉइंट्स लिखे मुझे सर। अब हम ऐसे कर ले बात, पहले वो कर ले, हाँ ये हम बाद में करेंगे, इसके बाद अगली दफा आप सवाल करें जी। आपने बताया कि हाइड्रेट चैनल जो है उसमें कोलैप्सिबल सॉइल, या तो क्या ट्रीटमेंट सब वहाँ पे आते हैं? Basically, you see, at Ghazi Parota Canal, there were two issues of civil engineering. One was to have the cross drainage structures, जो कि नहर के कैनाल के ऊपर से गुजरे, जो नेचुरल आपकी बारिश का पानी और फ्लड वाटर, providing them, you see, in a manner that they're deep enough below the zone to be affected by collapse. पहले तो उसकी डिटर्मिनेशन कर ली गई, क्लासिफिकेशन की कि कहाँ कोलैप्स ज़्यादा है और कहाँ कम है। जहाँ कम है and the structure can withstand that, वहाँ कोई खास मेजर न लिया गया, वहाँ I think I went with your match type foundations, और जहाँ कोलैप्स ज़्यादा मालूम हुआ वहाँ डीप फाउंडेशन के थ्रू आपने काम चला लिया। नंबर वन, ये तो हो गया स्ट्रक्चरल मेजर्स, इसी तरह के मेजर, लेकिन these are all backed by proper testing. सेकेंडली, जो उसका कैनाल का अपना जो स्लोप्स थी, वहाँ it was the material was replaced with non-collapsible soils to the limit that it was, and the effective drainage system was provided behind the canal, ensuring that water जो उसका सीपिंग होगा भी वो पीछे खड़ा नहीं रहेगा, बल्कि निकलता जाएगा। तो these were the measures we were taking along the power channel. तो मुझे पता नहीं क्यों याद पड़ता है कि सोहेल साहब ने भी जिक्र किया था, सोहेल साहब वो ग्रीन की नहीं आई थी गाजी बरोता के लिए, वेट रिड्यूस करने की खातिर ना कोई इसके से भी मेजर्स लिए गए थे, ठीक के अंदर भी रहना वो for power channel, not to my knowledge, कंसिडरेशन होगी, आई तो नहीं थी वैसे। दैट कुड बी वन मेजर। लोगों ने बड़े बड़े वो तरीके इख्तियार किए हैं वैसे तो वेट कम करने के लिए। सबसे ज्यादा इंप्रेसिव तरीका नॉर्वे का था जो मैंने देखा, वो तो कमाल करते हैं। दे यूज दैट वाइट, वो क्या कहते हैं जी उसको, जो पैकिंग मटेरियल है, थर्मोपोर। दे यूज meters of thermopore to replace, you see, the soil load, you see, soft soil का जो load है उससे, because the thermopore is very light, and they made actual structures there which are having very controlled settlements. अच्छा, पर ये भी होता है ना कि आपने जो स्ट्रक्चर बनानी है उसमें वो रोटेशनल और मूवमेंट की कैपेबिलिटी ऑब्जॉर्व करने की विदाउट डेवलपिंग क्रैक्स। आई मीन नॉन मोनोलिथिक किस्म के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, सिंपली सपोर्टेड टाइप जो एडजस्ट हो जाए, आर्टिकुलेटेड, जिनमें क्रैक्स आए ही ना, जिनमें कनेक्शंस आर नॉट हैविंग रिजिड कनेक्शंस एंड द मोमेंट कैन नॉट डेवलप, सो दैट एट द कनेक्शन द मोमेंट्स डोंट डेवलप, घूम जाते हैं वो। इस तरह के उन्होंने काम किया है। मैं किसी वक्त, आप मेरे पास शायद है कुछ स्लाइड, आई विल बी एबल टू शेयर। और बताइएगा, पोरस कंक्रीट का आपने बड़ा मजे की बात की। ये पोरस रोड्स का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, मतलब लाइट वेट होगा और उसमें मैंने किया नहीं गया वैसे मेरी ख्याल में, क्योंकि मैं तो सारा वक्त इसकी टेंडर स्टेज तक टेंडर डिजाइन में साथ था। एक्चुअली कह रहा हूं डिस्कस पड़ता है कि मैंने सोचा कि मुझे सुना था कि ऐसा हम सोचा पाएंगे तो उनसे पूछेंगे, फिर उनसे उन्हें कहेंगे जरा आप क्वालिटी सेक्शन शेख साहब भी थे तब। जिक्र करते हैं क्वालिटी सेक्शन में एक बार अच्छा,
वैसे ये पोरस कंक्रीट और पोरस रोड्स का कॉन्सेप्ट अब ये जो अर्बन फ्लडिंग है ना इसमें काफी शुरू हो गया है. That we provide porous roads so that the water may circulate from the road somehow. Part of it goes into the ground. इसके दोनों यूज है ना, एक यूज जब ये शुरू हुआ था तो ये वेट को कंट्रोल करने की खातिर था और आहिस्ता आहिस्ता इसकी और भी एप्लीकेबिलिटी बढ़ती जा रही है. अच्छा फिर ये लाइट वेट एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट शायद वो डिस्कस होता रहा था गाजीपुर रोहतक में, इन विच यू heat up the shale and it swells you see and results into lightweight aggregate. तो वो जो lightweight aggregate का इस्तेमाल था इन आरसी वर्क वो बात होती रही थी, वो मुझे याद है. अच्छा दूसरा आपकी वो भी सवाल Anybody else कोई और? मेरे से दो पॉइंट थे वो मतलब वो करने के लिए ना, एक आपकी जो 16 नंबर स्लाइड में आपने लिक्विफाई पर और डिस्पर्सिव का जिक्र किया था, पीछे जाएं 16 नंबर. इसमें बहुत जरिए बता रहे थे इनमें बड़ी क्लियर कट कैटेगरी बनती है. ये तो आपने सिर्फ तुर्बत का जिक्र किया, मैंने सिर्फ तुर्बत का जिक्र किया. हाँ जैसे बलोचिस्तान में से जी बलोचिस्तान में जिधर जिधर हम गए हैं वहाँ हमें डिस्पर्सिव मिला है आपको. वेरी गुड वेरी गुड. और किस ऑर्डर का डिस्पर्शन मिला है? एक तो होता है ना कि काम या ज्यादा. अच्छा ये ND2 से लेके ND4 तक की है. ओके. ठीक है. How serious it has been on the dispersion scale? It's not right away D. Right away dispersion नहीं, लेकिन ND4 तक चला जाता है. Okay. If we talk of that chart which correlates the exchangeable sodium ions, percentage of the exchangeable sodium with the total TDS. वो बात आपको कहना चाह रहा था कि जो आपने एक जगह पर आपने जिक्र किया ना उसका लैब टेस्टिंग का for identification of problematic soils ना, खास तौर पे डिस्पर्सिव के ऊपर ये काफी सारी मेहनत हमने की हुई थी. ये शुरू के अंदर I don't recall के CMPS से हमने कुछ टेस्ट कराए थे, कौन सा कॉलेज था वो I can't recall. लेकिन उसके बाद जैसे हम बलूचिस्तान में गए हैं ना, TPS की जब प्रेजेंस बलूचिस्तान में आना शुरू हुई है तो सबसे पहले तो वो आपने स्लाइड नंबर 9 में इंडिकेशन ऑफ साइट की बात की ना, शेड है वो डिस्पर्सिव सॉइल की एक मेजर इंडिकेशन है ना. जिस वक्त आप साइट की तरफ जा रहे हैं और आप पहाड़ियों को देखना शुरू करेंगे आपको डीप गैलीज नजर आने शुरू हो जाएंगी, ऐसी जैसी कार हुई है खूबसूरत तरीके से ना उनकी कार्विंग हुई है. दैट इज द साइन ऑफ डिस्पर्सिव सॉइल्स. मतलब वो पत्थर नहीं है, वो एक तो ऐसे स्टेटस की जो पहले की बुक नहीं है, उस पहले की बुक से ज्यादा खूबसूरत तस्वीरें आपको बलूचिस्तान में मिलेगी. उसमें कुछ इरोजन भी साथ शामिल होगा, इरोजन का एलिमेंट नहीं, इरोजन से ही पड़ती है. मतलब वो आपको बाकायदा स्ट्रीम लाइंस और उनके जो कंट्रीब्यूटिंग वो चीजें वो बाकायदा बड़ी खूबसूरत तरीके से नजर आ रही है. एक दो जगह पे गाड़ी खड़ी करके जाके मैंने हाथ लगा के भी चेक किया था, वो दूर से क्यों लगता है पत्थर है. अच्छा. Maybe it's shade. लगता ही है, impression ऐसा आ रहा है. राइट. लेकिन जब आप जाके उसको हाथ लगाते हो वो पिक्चर्स इसकी शेयर कीजिएगा नेक्स्ट टाइम हम इकट्ठे होते हैं ना तो कोशिश कीजिएगा अगर अवेलेबल है. वो पॉजिटिव मिटिगेशन जो है ना वो बाकी में होती है. आपको अंदाजा होना चाहिए कि इस जगह के ऊपर ना गड़बड़ होनी होती है. असल अच्छे इंजीनियर का यही काम है. जैसे आपने ये अपना एक इंडेक्स डेवलप किया कि देखकर मैं अपने इस प्रोजेक्ट में किस तरह से अंदाजा लगाऊं. इट्स वेरी गुड. अच्छा उसके बाद फिर जिस वक्त आप पहुंच जाते हो उस जगह पे और आप वो मटेरियल मतलब आपको इधर जब भी आप उस जगह पे केस ढूंढोगे या सेल्स ढूंढोगे और एनवायरनमेंट है तो आपको किसी मटेरियल का मिलेगा. ओके. ठीक है. तो आपको टेस्ट कराना ही कराना है. ठीक है. ताकि आप ये तो अंदाजा कर सको कि लेवल ऑफ जैसे हमने वो अब आपने क्या किया अब हमारी अप्रोच क्या है वो जरा बताइएगा. हमारी अप्रोच फिल्टर डिजाइन की क्या होगी. ND1 आए या ND4 आए हम क्या करते हैं हम उसको नहीं डिस्पर्सिव लेते हैं. I would dispersive to be on the safer side. Okay. very safer side ताकि because this is some logic also because when you have these soils in nature you don't have
कंट्रोल ओवर देयर एरेटिक बिहेवियर के इधर ये कम वाली है ज्यादा है फिर कम वाली ज्यादा, तो वो आपको सारा वो डिफरेंशियल तरीके से पढ़ा हुआ है, यू हैव टू कंसीडर इट। Not only that, we don't even have control over the contractor. सबसे बड़ी बात ये होती है, ठीक है, क्योंकि अगर फिल्टर हम ज्यादा चौड़ा करेंगे तो वो और ज्यादा खुल के करेगा, छोटा करेंगे तो वो थोड़े काम के ऊपर आपका कंट्रोल अच्छा है। अच्छा आपने लाइम के साथ इसकी एक्सपेरिमेंटेशन किया है दैट इफ यू हैव टू यूज दिस एज अ कॉम्पैक्टेड फिल समवेयर, तो इसमें अगर आप लाइम ऐड कर दें तो इसकी डिस्पर्शन पोटेंशियल में कमी वाकई आती होती है। ये मजे की चीज ये है कि ये काम उन लोगों के दिमागों में पहले से है क्योंकि वो उसी इलाके में रहते हैं। अच्छा, हाउसेज ही मड हाउसेज होते हैं ना। अच्छा, एलीट से एलीट जगह पर भी आप जाएंगे तो मड हाउस है। मड हाउसेज कैसे बन रहे हैं? वो किसी लाइम और इसके मिक्सचर से बन रहे हैं। गुड 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 गुड। वो ठंडे होते हैं गर्मियों में और गर्म होते हैं सर्दियों में। बाकी अगर आप कंटेनर लेकर जाते हो बहुत गर्मी में 52 डिग्री टेम्परेचर अंदर हो जाता है, जिसमें आप कंटेनर के अंदर बैठे होते हो, आपकी हालत खराब हो रही होती है, कमीज में सब उतार हो के बैठना पड़ता है, इतना शदीद गर्मी। तो ये सब इंजीनियरिंग बेसिकली जो है इसकी डेवलपमेंट एक तो नेचर की कॉपी है, कॉपी करके तो मैथमेटिक्स थ्योरी से बाद में आती है, लेकिन लोकल इंसानों ने भी जहाँ हम देखते हैं और हमें इन एरियाज के एक्सपीरियंस लिए लोकल इंसानों ने जो तजर्बा गेन किए होते हैं उसको भी हम कॉपी करते हैं। दिस इज इंजीनियरिंग, ये गौरव भी यही करता है। अच्छा, You copy the nature. An aeroplane is a copy of the bird flying. फिर आपने लिक्विफाइबल सॉइल्स का जिक्र किया, जितने आपने प्रोजेक्ट्स इधर नोट डाउन किए होंगे ना, ये अलूवियल प्लेन्स है। अलूवियल प्लेन्स लाजमी तौर पे हमारी जितनी भी है ना, नॉट ओनली दीज, जितनी भी हम अलूवियल खास तौर पे इंडस के अलावा, ये सारे के सारे लिक्विफाइबल एरियाज हैं। आपके नॉर्थ में भी वो एरियाज where you have occasional sandy deposits because of the geological effect, because the seismic effect is very high, normally they would also be liquefiable. नॉर्दर्न एरिया में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि वहाँ का जो अलूवियल प्लेन है ना, उस अलूवियल में ग्रेविटी स्ट्रेटा ज्यादा है, तो ग्रेवल की लिक्विफेक्शन जो है ना वो एक दफा कम होता है। आपको याद है मैंने जिक्र किया था आपके साथ कि ग्रेवल के अंदर जो है ना वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जब डोमिनेंट स्ट्रेटा Unless the shipping is very strong. unless it's very strong। क्योंकि मामला होता है लिक्विफेक्शन में पोर वाटर प्रेशर डेवलपमेंट के होने का या डिसिपेट होने का। ग्रेवल में क्योंकि वॉइड्स और स्पेसेस ज्यादा होते हैं तो वो पोर प्रेशर इतना डेवलप नहीं होता, निकल जाता है पहले। वो बेसिकली जैसे यहाँ पर होता है सैंडी ग्रेवल, वहाँ पर होता है ग्रेवली बोल्डर। ग्रेवली बोल्डर में तो यार क्या मतलब लिटरली मतलब आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसे ही है। तो वहाँ वाले रीजन में होंगे आपके वो बाकी सारे ऐसा ही है ना, दे आर नॉट लिक्विफायबल, उनमें ये चांसेस नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे आप डाउन में आते हो ना, जब वो जो दरिया की जो स्ट्रेंथ है वो आहिस्ता आहिस्ता नरना शुरू हो जाती है, वो बड़े रीजन में आ जाता है, उस जगह के ऊपर सारे के सारे जितने भी इलाके हैं वो आपके लिक्विफाइड होते हैं। मैंने वैसे एक एक्सपीरियंस मुझे हुआ था जो कि सिविल वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए एयरफोर्स सिविल वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी दे कंस्ट्रक्ट यू सी द वर्क्स फॉर ऑल थ्री फॉर्मेशंस ऑफ आर्मी, नेवी, फॉर एयरफोर्स एंड फॉर पाक आर्मी, मिलिट्री का जो है। अच्छा, तो वी वर सपोज टू डिजाइन अगेंस्ट बॉम्ब ब्लास्ट, अगेंस्ट अ बिग बॉम्ब which would penetrate into the ground 5-7 मीटर जाके तो फिर फटे और फिर उसके जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर पे जो असरात हो वो सेफ रहे। अच्छा, तो उसमें जो एक्सपीरियंस हुआ, जो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, ये काफी साल हो गए हैं, that even under a very big bomb blast, even the dense sands SPD below 60-70 भी हो वो भी लिक्विफाई हो जाती है। This was something new to my edition and I read some papers on this also. मेरे हाथ लग गए, वो मंगवाए चार्ली, वन ऑथर्स चार्ली, नेट पे इसके मटेरियल ज्यादा नहीं होता, जो कि ब्लास्ट मटेरियल है इसको जरा थोड़ा वो समझ लें कि दहशत गर्दों के हाथ में लग जाएगा, ये उठा लिया गया है। तो even dead sand, it is a condition, and the new literature of American Society of Civil Engineers says that if the plasticity index of cohesive soils is up to 15, even we will consider them to be liquefiable. Why? Because the manifestation of the damage to them in terms of loss of a lot of strength and a lot of deformation is akin to
द लिक्विफेक्शन बिहेवियर ऑफ द लिक्विफाइबल सॉइल, ये एएससी ने नई क्लासिफिकेशन कर दी है, कोहेसिव सॉइल्स को भी एक हद तक उसमें डाल दिया है डैमेज की क्लासिफिकेशन की बेसिस पे, कि वो उसी तरह का हो जाता है। और जनाब कोहेसिव आई एम टॉकिंग कोहेसिव सॉइल्स। सैंडी नेचर का सॉइल जब इस किस्म के फिनोमेना से गुजरेगा तो वो कोहेजन भी आ जाएगी। ये फिनोमेनन जो है ना, नहीं उसमें नहीं आएगी, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, आपने वो दूसरी बड़ी गहरी बात छेड़ दी है। Undrained behavior of granular soils, you see, when they are subjected to undrained loading, earthquake loading is also undrained loading, तो उसमें कोहेसिव एलिमेंट तो आ जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो तो जो पुराने इवन 60s और 70s में सीड ने ये चीज टेस्ट करके लैब में मालूम कर दी थी, अनड्रेन्ड बिहेवियर ऑफ द नॉन कोहेसिव सॉइल। लेकिन मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, अनड्रेन्ड बिहेवियर या ऑफ द नॉन कोहेसिव सॉइल। जब मैंने पहली दफा पढ़ा तो वो एक इंकशाफ था मेरे लिए भी, लेकिन हमें असल में चीजें जरूरत से गुजरती हैं, लेकिन हमारा जो वो है ना मोड ऑफ एक्शन जो है वो बड़ा डिफरेंट था। हमारे प्रोजेक्ट्स उस तरह के वेरिएंट नहीं है ना कि हमें हर किस्म के सॉइल का आइडिया हो। अब आज का जो हमारा एक मसला हो रहा है मेरा सिर्फ बड़ा है जी, सिर्फ मतलब आपने एक टाइप ऑफ सॉइल है जो जैसे सलीम मतलब नेचर की जो एनवायरनमेंट है, सलाइन एनवायरनमेंट से कहीं या सलाइन एनवायरनमेंट के या बड़ी या जेटी वाले एरिया को उधर मार्शेस वाला एक रास्ता क्या कवर किया, ठीक है, स्वैम्प्स एंड मार्शेस वाला एरिया तो आ गया। जैसे आप मैंग्रोव एरिया हो गए, आपके कोस्ट लाइन शोर लाइन एरिया हो गए, जो जिनमें बड़ी रीच हो, वी आर स्वैम्प्स देयर एंड वेरी हाई मॉइस्चर एंड वेरी सॉफ्ट कंडीशन। लेकिन उसके अलावा एक और मेजर इशू इधर ये है कि यहाँ पर अच्छा खासा सलाइन एनवायरनमेंट है, उसमें आपका जो जैसे पानी तो है ही ऐसी वाटर है, ठीक है, अब वो पानी जब लग रहा है उस सारे रीजन को, तो वो पानी वो जो मटीरियल है उसमें भी ये इफेक्ट आ रहा है। मतलब अब जैसे हम किसी जगह पे जाके वैसे मिट्टी उठाते हैं या देखते हैं ना, तो वो हमें इतनी वो नहीं बॉयल करने जगह पे हो, लेकिन उसका अगर हल्का रिलीज करते हैं तो हमें सोडियम या वो जो है ना उससे ज्यादा दूसरी चीजें महसूस हो रही होती है ना, मतलब वो इतना ज्यादा वो सॉल्टिश ज्यादा होता है, ब्रैकिश किस्म का, ब्रैकिश नहीं आ रहा ऐसे ही है। लेकिन जब आप मेहता इस एरिया को पकड़ते हैं तो उसका वो करीब लाते हुए आप जाते हैं क्या इतना। तो ये मिडिल ईस्ट में इसको सबका कहते हैं ना, इसी तरह की फॉर्मेशंस को, जिसमें डिफरेंट किस्म के सॉल्ट्स और जिप्सम खासा पाया जाता है, and they are also soft deposits. Some hard deposits are known to be soft, high moisture, many salts mixed in soil. ये आपने अभी मतलब आपकी लिस्ट के अंदर ये शामिल नहीं करा, हाँ, तो ये चीज बड़ी जरूरी होगी हमारे लिए। अगर टीम लोग करते हैं तो ये सब कोर्स देख लीजिए, ओके, मतलब ये बड़ा फायदा होगा कि करंट मॉडल क्या है, ठीक है, और अपने इसके ऊपर काफी मतलब पूरा बड़ा स्ट्रक्चर भी बनाना है, ठीक है, इसके बाद हमें रेगुलेटर्स डेवलप करने हैं उसके ऊपर, हमने फिर बैकअप स्ट्रक्चर्स भी उसके ऊपर डालने हैं, कैनाल्स भी निकालने हैं, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स किस्म का होगा, ठीक है। तो मैं वो जो जिक्र कर रहा था ना उसका लिक्विफाइबल सॉइल के कॉन्टेक्स्ट में, दैट अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स न्यू रूलिंग, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ऑल दोस कोहेसिव सॉइल हैविंग प्लास्टिसिटी इंडेक्स अप टू 15, they also show excessive loss in strength and excessive deformations, which are like liquefiable soils, which is otherwise defined for non-cohesive soils. ये उन्होंने बात की है तो हम उनको भी कह देते हैं कि this is also, they are also liquefiable, even cohesive soil with this definition. Although the pore water pressure concept is not there, the cohesive soil will not develop pore water pressure like non-cohesive soil will do. आपको मैं इसके ऊपर बैठकर कुछ मटेरियल शेयर करूँगा, है ना, ये नया नुकता है, मैंने जरा सबको जरा हमने क्लोज किया है ना, हाँ जी, इससे आगे भी हमारा असर काम शुरू होगा, तो हम इसका पार्ट 2 करते हैं ना नेक्स्ट टाइम, ठीक, इंशाल्लाह। ये तो टॉक हमारी हो जाएगी और लंबी, वैसे भी चल सकता है ये 3-4 घंटे, लेकिन मेरा ख्याल आप लोगों ने काम करना है ना, आई डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट यू एक्सेसिवली। तो और कोई सवाल?
And if you have any other question, you can come to me या मेरे से बात कर सकते हैं, email लिखिए मुझे. सर ये जो आपने कहा था कि डेंस साइड जो है वो भी लिक्विफाई हो जाए. Yes. तो उसमें जो प्रोसेस था वो डाइल्यूशन का प्रोसेस होता है. Whenever there is liquefaction, you see in regular ground, ये देखें जरा, when we are talking of regular ground which is not liquefied, we have particles lying in contact with each other. This is the shape of the ground made up of individual soil grains having contact, and if some load is applied on such system, the taking or transference of the load or stress is through particle to particle contact. ठीक है, इसका मतलब है कि जो particle to particle contact है, that is important for the safe transference of the load. During shaking, the particles literally and physically get separated. The particle to particle contact is lost. दरम्यान में क्या है? पानी है. Because liquefaction will take place when you have saturated soils, loose to medium dense condition in general, but जैसे आपने कहा, मैंने बात की है कि हाई ब्लास्ट जो है वो डेंस सैंड में भी लिक्विफाई कर देगा, तो ये खुल जाते हैं, and this condition is called rarefaction. ये rarefaction की कंडीशन में ऊपर बनी हुई है जनाब इस तरह की ग्राउंड में एक स्ट्रक्चर रखी हुई है, तो वो तो पानी का मीडियम हो गया ना, because water is not able to provide any shearing resistance. This was providing shearing resistance. नतीजा ये होगा कि यूं ही earthquake ऐसी लोडिंग वाला, this is the loading pattern of the earthquake wave, which is called acceleration time history. इस तरह की टाइम हिस्ट्री जब खत्म होगी तो पार्टिकल की जो दोबारा रीअरेंजमेंट है, it will be much denser than even the one which was in a natural state. Voids और कम हो जाएंगे. So liquefaction and post liquefaction results into more densification and more settlement. हम इंजीनियर्स के लिए तो सरफेस के ऊपर वो सेटलमेंट हो जाती है और ज़्यादा बैठ जाता है. इस बात से sometime for certain barrages or certain projects पहले धमाका करके एक्सप्लोजन करके लिक्विफेक्शन कॉज कर ली जाती है ताकि सेटल हो जाए. दैट इज अ वे टू कॉज कंसोलिडेशन, देन द कंस्ट्रक्शन इज मेड. और कुछ है? दैट्स इट. चलिए आज के लिए काफी. तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें, वो तलाल मुझे दे देंगे, मैं उसमें डाल दूंगा. फीडबैक दिया करें, because that makes the basis for understanding your opinion and to make any improvement. या आपकी क्या चाहिए आपको? Okay जी, thank you very much. Thank you sir. Thanks a lot.